Assalamualaikum. Welcome to Baithak episode 3. We are so glad you made it this far. We are very happy to see you here because हमने सोचा था कि शायद कोई no one will make it through. But anyway, thank you for joining. Why not? It's going to get more interesting. That's why I'm going to start. But thank you for joining us. As you can tell, हमारे आज panel में we have Ali missing due to some personal commitments, but that's okay. We're going to go ahead anyway. We have the usual panel with us, myself, Asad, Shayan, and Amber Baji. And today it's going to be very interesting, very interesting topic. Before we start, just like to, keeping up with the Baithak theme, we have homemade parathas. Lacha parathas. And our chai. But I don't have my chai. So. Exactly. That one's empty. My one is full. So, we're here today and we're going to be discussing a very interesting topic. And I'll let Asad start the topic and tell you what the topic is going to be. अच्छा हमारा टॉपिक आज जहाँ हमने एपिसोड 3 खत्म किया था एपिसोड 2 हमने ख़त्म किया था कि तो हम उसी को मूव फॉरवर्ड करेंगे कि हमारे बच्चे आगे से हमारी जनरेशन क्या अब वापस जाना चाहेगी पाकिस्तान और विल वी वुड लाइक टू सी दैट हैपन एज वेल कि हमारे बच्चे जाए पाकिस्तान और क्या कहते हैं what are the options for them to grow in Pakistan और क्या चीज़ है we will be discussing on that तो चीज़ तो ये सीन ये है कि फिलवक्त तो नज़र नहीं आ रही काफ़ी सारी चीज़ें It's not necessary कि पाकिस्तान जाएं वापस कि नहीं जाएं. The thing is कि हमारे बच्चे जो यहाँ पर brought up हुए हैं या majority of them are born here. तो अगर उनकी generation जो है वो वापस पाकिस्तान कौन से पाकिस्तान जाना चाहे? Is it appealing to them or not? Is it something that is going to make them happy? कि भाई for them to leave a first world country and go into another country, there needs to be an alternative. तो वो alternative है क्या? कि मतलब वो उनको वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, job opportunities हैं, और उनकी lifestyle कैसी है? Is it equivalent to whatever is here? So there's a lot of question marks when it comes to these sort of things कि बच्चों को क्यों वापस जाना है अगर जाना है तो and another very important thing is कि हमने बच्चों के अंदर कितना पाकिस्तान के लिए मोहब्बत इज्जत और उनके लिए एक वो क्या कहते हैं पैशन जो होता है पाकिस्तान के लिए जिसको हम नेशनलिज्म या मुहिब्बुल वतनी है मुहिब्बुल वतनी but the thing is कि हम जैसे जो हैं for example हमारे अंदर वो चीज़ है alive. Definitely. And that is the reason why we're doing this because there is a comparison to this. That's right. लेकिन हमारे बच्चों में मेरा ये ख्याल है कि हमारे तक ही खत्म हो जाएगा. अल्लाह ना करे. I think so. अल्लाह ना करे. Look, हमारे यहाँ पे ना just for context. मुझे लग रहा है. Just for context, guys. Shayan अभी recently में हो गया. पहले पाकिस्तान से वापस आया and he spent a good time out and about, you know, like लोगों से मिलना, चीजें खरीदना. I think this is ये चीजें ऐसे. What do you think? क्या experience रहा? और like look, general experience. From my point of view या दूसरों के point of view से? Really, because you are the one जो यहाँ से जा रहा है. मेरे point of view से मैं अपने बच्चों को सिर्फ visit के लिए लेके जाना चाहूँगा. इससे ज़्यादा नहीं. Why? क्या reason? एक तो जो environment बन चुका है वहाँ पर कि it's all about this now. It's money and your contacts. There's no खानदान, प्यार, you know what I mean? Yeah. The family यारी कुछ रखना है. Fraud, 2 नंबरी खानदान वालों के अंदर भी चल रही है. Ripping people off, scamming हर जगह चल रही है. कोई भी बैरियर नहीं रह गया कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, इसको चूना लगाओ. चक्कर ही नहीं कोई. हमारे जैसे आपके बच्चे आपके वो तो बिक जाएंगे, खड़े बिक जाएंगे उधर. वो तो छोटा बच्चा है कहेगा क्या रेट है जी, इसको बेच दो सीधा. ये हिसाब उधर चल रहा है इस वक्त. इट्स अ गुड प्लेस टू लिव इफ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स. अगर रात का आप काम करते हो, यूएसडी आईटी का काम कर रहे हो, जैसे हमारे काफ़ी लोग हैं, इफ़ यू अर्निंग दैट वे इट्स अ गुड
सीन, अच्छा ज़िंदगी चल रही है माशाल्लाह, अच्छे अर्न कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट आई वुड से कि जो उधर पीकेआर में कमा रहा है वो कोई सीन नहीं है, वो रो रहे हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है, जो वहाँ पे अच्छा कमा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तक, अमीर से अमीर, गरीब जो से गरीब है वो गरीब से आपका गरीब क्वेश्चन तक। की यार कि उधर अपॉर्चुनिटीज जॉब्स वगैरह हैं, एंड दैट इज़ अ बिग एन ओ नो। जब तक ये चल रहा है सही सेम, बात गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी भी नहीं चल रहा, उधर लॉ एंड ऑर्डर भी बस लाहौर के 12 दिन में तो मुझे अच्छा लगा, रोड्स वगैरह सब कुछ अपग्रेड हो गया, बट दैट्स जस्ट बिकॉज शायद इलेक्शंस आ रहे हैं। वो तो एक सिटी है ना, एक सिटी है, वो एक सिटी है, दैट्स आई कांट वाउच फॉर एवरीवन। एंड एवरी मेजर गवर्नमेंट दैट कम्स, इट सीम्स लाइक वो क्या करते हैं कि जी कराची हो गया, लाहौर हो गया, या इस्लामाबाद तो खैर दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, बाकी जो ऐसा मेजर सिटीज़ हो गए उनके अलावा कहीं कोई ध्यान नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाता, गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ तो होगी। एंड प्लस जो कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, एंड आई एम श्योर आप लोग सारे जानते ही होंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, लोन्स के लिए भाग रहे हैं, कभी किसी कंट्री के पास, कभी किसी, ऐसी इकोनॉमिकल स्टेट में किसी भी मुल्क में ऐसी ही भगदड़ मच जाती है, जिसमें एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ हो जाता है बेसिक। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली केस। इस वक्त जहाँ जहाँ पर वॉर चल रही है, जहाँ जहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है। तो इन अ वे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यस, पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब है, बट आई वुडंट से, पर पॉजिटिव्स भी हैं कुछ। Positives, पॉजिटिव की अपनी yeah. अपनाइत आपको फील होती है, टच डाउन टू द साथ ही, because at the end of the day, आई लैंडेड, आई वाज लाइक ओह मैन, दिस इज होम, yeah, दिस इज होम टू, बट वो ओरिजिन, yeah, because ये वही गली है, ये वही ओरिजिन है, मैं बच्चों को चाहूँगा देखे, yes, पर सिर्फ देखे, एंजॉय करे, महीना रहे, कल्चर अडेप्ट करे और फिर कम बैक टू इट, आई गेस। बिल्कुल। yeah, See, कितना डिफरेंस है, लाइक व्हेन वी, अगर मैं देखूं कि इफ आई वाज टू गो बैक 40 years, when we 45 years, जब हम ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान जाते थे, एक तो हमारी एक्साइटमेंट ऐसी होती थी एज चिल्ड्रन दैट आर रेज्ड हियर, हमारी एक्साइटमेंट ऐसी होती थी कि मेरी रात भर नींद नहीं आती थी कि हमने सुबह जाना है पाकिस्तान। एंड देन पाकिस्तान जाके जब हम उतरते थे तो पूरा खानदान हाथ फूल लेके खड़ा हुआ, yes, और that was like such a beautiful feeling. We felt that we were missed and you, and we, yeah, you're they wanted, yeah, we are wanted. बेस्ट फीलिंग पता क्या, जब वो डोर खुलता था ना, आप एसी से एकदम गर्मी के अंदर खुलते थे, वो एक मट्टी की खुशबू आपके मुंह पे आती थी, इवन दो पीपल लाइक ए ये क्या, वो जो खुशबू है ना, वो मट्टी है, वो कभी कभार गोबर भी है, जो भी है, लेकिन खुशबू जब वो मुंह पे लगती थी ना, you felt कि you belong, you know, that's I'm home, Absolutely. लेकिन yeah, आफ्टर ऑल दैट जो है ना एयरपोर्ट का अंदर गंद से निकल के, क्योंकि एक ही आपका स्कैनर है, उसमें सब धक्के मुक्के चल रहे हैं, एक ही फेंको जल्दी जल्दी, पैसे पूसे खिलाना शुरुआत हो जाती है, तो साथ ही यार कंडक्टर को 5000 दिया, भाई जल्दी निकाल, अच्छा वही बात अंदर भाई, वो शुरुआत हो जाती है तब साथ ही, बिल्कुल, बिकॉज आपने ख्वारी में नहीं वही बात अंदर भाई आपने बहुत सही कही कि जैसे मुझे याद है आई वाज स्मॉल व्हेन we first came. फर्स्ट टाइम यू केम टू पाकिस्तान, हम लोग सब सुजुकी में भरकर आए थे आपको देने के लिए, आज मुझे याद है। लेकिन अब वही सीन है कि आज आप जाए तो आई डोंट इवन थिंक सो कि कोई एक बंदा भी लेने आएगा, ये एक बंदा लेने आएगा, वो बोलेगा चलो नहीं, आज मैं जाऊंगी तो मैं ये सोचती हूँ मैंने जाना कहाँ है, मेरा घर कौन सा है, मैंने किसके पास जाना है, मैं 1000 times मैंने सोचना है, चलो हम होटल में ठहर जाएं, हम इसमें ठहर जाएं, there is nothing there, I mean, and I don't blame, मैं फिर वो कहती हूँ, मैं उन्हें भी नहीं ब्लेम करूंगी, बिकॉज जिन हालातों से वो गुजरे हैं और वो जो गुजर रहे हैं, why would they come and appreciate and take us like this? वो इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं, उनके पास बिजली नहीं, okay, I'm not talking about those people जो हराम का खा रहे हैं, और I'm sorry to say, और जिनके पास फजूल का पैसा है, और वो नजर आ रहा होता है कि वो नया नया पैसा है, and they've got no कदर, ना उनकी औलादों को कदर है, ना उनको खुद को कदर है, they're driving in their Audis, they're driving in their Mercedes, they're driving in everything, सब कुछ करने के लिए, they're going to, you know, the best cafes and restaurants, उनकी lifestyle living in Pakistan, उनको तुम पाकिस्तान से निकाल के किसी वेस्टर्न मुल्क में नहीं डाल सकते, because if you did, they couldn't survive here, because यहाँ तो हाथ पाँव, यहाँ तो हर चीज़ आपको, you know, you got to do it legally, you got to do everything, कोई भी आपको ऊपर का पैसा नहीं ला के देगा,
वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. But they're happy, they're fine, they've got no issue. क्या है, Pakistan's the best. Of course Pakistan's the best for you, because Pakistan is giving you that income that you don't deserve, first of all. And second of all, you will not get it anywhere in the world. वो आपको लग्जरी नहीं मिलती ना फिर उसके लाखों में कमा रहे हो तो. But I guess अगर And I'm sorry, I'm going to get a lot of haters because of this. नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह देखें ना तो कहीं पर भी, like ऑस्ट्रेलिया में भी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, it's not the best life. I mean, यहाँ पर भी आपको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा. फिर भी. लेकिन right The side, standard of living, every one of us have electricity, whether you can afford it or not, because the government helps you. Yeah. Everyone has access to water. Yes. These are basics. Yes. These are living standards which are basics. I mean, come on, yaar. I mean, you've got Bangladesh, for example, mashallah. that left us. Yeah. Good on them, I say. Good on them. तो ये हमारी फिर बेसिकली वो ये ना कि lack of leadership का इशू है. नहीं, it's the frustration that we have, and people might think कि ये तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको क्या पता है, इनको क्या, हमें frustration होती है. Yes. Each time elections come, I mean, मुझ जैसा बंदा जिसको elections के बारे में zero पता है, पाकिस्तान की ना assembly ना ये ना वो, फिर भी I'm sitting there fascinated. क्या होगा, क्या होगा नहीं, कौन आएगा, आना तो चोरों नहीं है, तो कौन आएगा, इस मुल्क को फिर दोबारा से कौन लेके चलेगा. At the end, same side, क्या कहते हैं ना वो saying है कि same side of the, क्या कहते हैं वो, one side of the same coin or two sides of the same coin, something like that. They're both the same sides. They're both the same side. Essentially, it's the same coin. That's what the whole idea. पर मेरे ख्याल है बच्चों को विजिट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए. फिर भी बच्चों को कराना चाहिए, पर आई फील रियली सैड अगर तुमने जैसे ये चीज़ कही कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ विजिट के लिए लेके जाऊंगा. मैं कभी पसंद नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे वहां पर रहें. मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है. आई वुड लव दैट माय किड्स गेट द अपॉर्चुनिटी कि वो जाएं, और अगर दे आर पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहां पर जो उनको रिसीव करे, that needs to be a person or that government that actually makes, like, हम सब जो बाहर आए हैं वो क्यों आए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ना. यही बेटर अपॉर्चुनिटी अगर हमें पाकिस्तान में अच्छी गवर्नमेंट होती, क्या हम वहां नहीं कर सकते थे? We could have built it there too. If we're building another country, we can build there. Exactly. और हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अगर देखो, migrants are the ones who are building this country. ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका हो, इंग्लैंड, It's the migrants ने ही डेवलप की हैं. माइग्रेंट्स एंड तभी तो ये लोग देखें ना, इनकी इमिग्रेशन नंबर्स देखें. अब ऑस्ट्रेलिया ने पिछले आई थिंक लास्ट ईयर वाज इट 600,000 पीपल केम in within the span of 6 months. So 6 months के अंदर 600,000 पीपल केम. अब आप सोचें यार, 6 लाख बंदा, इतना तो पाकिस्तान में 6 महीने में निकल गया था, लेकिन वो यहाँ इन्होंने अंदर लिए. एंड व्हेन यू गो आउट देयर इज स्टिल अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं कि आपका हक किसी ने मार लिया. हमें पता है कि we need them. Yeah, exactly, because that's how society is built. फिर वही बात आ जाती है लीडरशिप की. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका लीडर सिंसियर है टू द कंट्री, एंड कंट्री की एक डायरेक्शन है. सी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, कि हम क्या, अब ऑस्ट्रेलिया ना या अमेरिका भी, जो भी कंट्रीज हैं जैसे भी हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक डायरेक्शन है कि भाई दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव एंड विल डू इट विच एवर वे पॉसिबल. अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि जी इट्स अ स्टेट, उन्होंने एक सेट कोटा रखा हुआ है माइग्रेंट्स का जो आएंगे. अब उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि जी मेजर सिटीज़ में नहीं, इनको हमने रीजनल सिटीज़ में भेजना है ताकि even distribution हो population की, and it's being implemented, right? Because it's in everyone's interest. क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक जगह पर आ जाए तो property out of control हो जाए. So it's being managed and very well managed. So यहाँ पर country के पास direction है. But in saying that, sorry, कि हमारी जितनी भी Western countries है, don't think कि इनके जो leaders है, जो भी है power में, वो नहीं खाते, वो भी खाते हैं. Yes, okay, वो भी मतलब I don't believe कि कोई भी दुनिया में यहाँ पर कोई country है कि जिसके अंदर जो leaders हैं वो opportunist नहीं है, कि वो नहीं use करते उस opportunity को wherever that position that they're in. Agree. It's absolutely fine. खाओ, हमें पता है आप खा रहे हो.
लेकिन कुछ लगाओ भी तो सही। यार कसम खुदा लगा भी तो दो। लगाओ Yeah, कुछ नहीं, that's मतलब right. ऐसा करो कि जिस मुल्क में आप खुद रह रहे हो, you should feel proud of what you're presenting to the world. Can you Yeah, imagine कि आप as a delegate you're going as representing Pakistan as a leader? Do you feel shame going begging other people for money? Yeah. And they're going begging in other people for money in their private jets and पूरे delegations के Yeah. साथ, and you know इतनी वो disparity. लेकिन मैं जब मैं भी लाहौर गया था तो मुझे तो जहाँ मैं रह रहा था ये वो मुझे तो कोई गरीबी नजर ही नहीं आई, सब अमीर या है शायद मैं उस परसेंटेज में रह रहा Because था। आप because you're there ना। आप सर जी रह रहे हो डिफेंस के अंदर। फॉर्च्यूनर और आउडी से कम गाड़ी नहीं थी। Absolutely. ये डिफेंस हैवी ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़ कर सीन था वहाँ पर कि यार ये तो मुझे इधर रहना है, ये मैं डॉलर में कमाऊँ और इधर रहूँ, मेरा ये ख्वाहिश होती थी यार। और आसान आराम से ना। गार्ड लोगों के घर पे बाहर गार्ड, 2 नौकर, 1 कुक, छोटी रखी हुई है बच्चों के लिए। वही आप निकल के थोड़ा सा बाहर जाते, थोड़ा सा बाहर जाओ फिर पता चलेगा, वहाँ आपको पता चलता है कि लोगों बेसिकली अगर लोगों के अंदरूनी लिए शहर। अंडरस्टैंड, बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं तो he went and specifically went to a location, जिस तरह आप हम ऑस्ट्रेलिया में हो ना, तो ये बॉन्डाई चला गया, वहाँ पर जाहिर बात है गाड़ियाँ भी अच्छी होंगी एंड You're gonna cut this. oh yeah we're gonna have to दोबारा स्टार्ट कर। वहाँ गाड़ियाँ भी अच्छी होंगी एंड वहाँ पर यू नो घर भी अच्छे होंगे, लोग भी पैसे वाले होंगे। लेकिन अगर आप वही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी ये उठ के आप वेस्ट साइड में चले जाएं, डीप इनटू द कंट्री, आपको लोग मिलेंगे जो कि यू नो पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं, घर भी टूटे टूटे हैं, यू नो वो तो है, तो ऑफ कोर्स लेकिन रिस्पेक्टफुली रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज हाँ। कि अगर वहाँ वो रह भी रहा ना, उसके पास भी वो भी जब वोट करने जाएगा या वो कुछ लेने जाएगा, उसके पास वही पावर है, हाँ। वो खाना 4-3 वक्त का खा सकता है। वैसे एक दिन हम यहाँ के भी ना इलेक्शन का कुछ आपको बताएंगे कि यहाँ के इलेक्शंस कैसे होते हैं कि यू नो एंड देन पता भी नहीं चलता अभी आई थिंक actually my daughter she actually worked for the election committee यहाँ पर volunteers होते and हैं? as a volunteer and then she had to work all day all night and she couldn't leave until all the votes were counted. इस पे भी डिस्कस करेंगे। I think look रैप अप करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, सब अपना अपना एक ओपिनियन बताएंगे। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, आई वुड लव फॉर देम टू गो टू पाकिस्तान, एक्सपीरियंस पाकिस्तान, एंड व्हेन आई से पाकिस्तान आई वुड लव फॉर देम टू गो नॉट के लाहौर में लैंड करके डिफेंस में फिरे। मैं चाहूँगा उनको वो नॉर्दर्न साइड पे जाएं, हमारा वो पाकिस्तान देखें जो कि हमने खुद नहीं कभी देखना चाहिए, ताकि मैं भी पहली दफा देखूं और पता लगे ये पाकिस्तान है। उनको हमारे गांव लेके जाए, वो गोरे जा रहे हैं यार, गोरे जाते हैं एग्जैक्टली, उनको उस गांव में लेके जाए जहाँ पर मेरे दादा जहाँ पैदा हुए, जहाँ पर उनकी फैमिली अभी तक है। एब्सोल्युटली। मैंने वहाँ पर 6 महीने गुजारे, ये बुरे वाला की बात कर रहा हूँ, तो बुरे वाला में मैंने 6 महीने गुजारे। बुरे वाला तो बुरे वाला में 6 महीने मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ पर लिटरली जो मेरे अब्बू के जो ताया थे उस वक्त वो जिंदा थे, तो उन्होंने मुझे लिटरली मैंने अपने सामने मज्जों का दूध निकलते हुए, उसकी फ्रेश दूध, और बाद में पेट खराब हो गया, लेकिन चाय बनी, सुबह पराठे बन रहे हैं। जब आप निकल गए थे? नहीं, दिस इज 2007। ओके। तो हम लोग अमेरिका से पाकिस्तान आए थे टेम्परेरी पर आए तो परमानेंट थे, लेकिन वो भी एक स्टोरी है कि हम सेटल नहीं हो सके कभी, तो वी लेफ्ट अगेन। बट वो जो टाइम था उसमें मैं बुरे वाला गया, वाज यू नो इट वाज अ फैंटास्टिक पीरियड। सो आई वुड लव माय किड्स टू एक्सपीरियंस दैट, टू सी दैट before they forget who they are and they don't know कि उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स कहाँ से थे। I think being grounded and staying grounded is मेन चीज़ है यार, very essential for success। आपको पता हो कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, आप बाहर हैं, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, they consider this their country, but at the end of the day you cannot forget where you're from. It keeps you grounded and it keeps you level-headed. And here's another thing we're going to be talking about: are we accepted as who we are as Pakistanis? और अगर हमारे बच्चे जितने भी अगर born and brought up भी हो गए यहाँ पर, और फिर उनकी जनरेशन, क्या वो ऑस्ट्रेलियन
accept, मतलब would they be accepted as Australian? Yeah. That's another But yeah, topic. very But anyway, interesting ये मेरा 2 cents है. अपना opinion क्या आपका इस बारे में? आई थिंक मेरा ओपिनियन थोड़ा सा ये है कि ऑफ कोर्स अपने बच्चों को लेके जाएं, दिखाएं, बट मेरे ख्याल से आई वांट देम टू सी कि क्योंकि यहाँ पर उनको बड़ी इजीली सब चीज़ें मैसर हो जाती हैं, लेकिन वैल्यू इन चीज़ों की वैल्यू जिस तरह हमने सीखी है कि मतलब स्ट्रगल करके वैल्यू वो इन लोगों को आराम से मिल जाती है सारी चीज़ें. आई विल प्रेफर देम टू सी दैट, बट नॉट टू लाइक फॉर द टाइम बिंग कि वो उसको एक्सपीरियंस कर सकें. क्योंकि जो मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ ऑफ कोर्स एज अ फादर वही होता है कि पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हो. सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान के अंदर मैं सिक्योर भी फील नहीं कर सकते. अगर आपकी लड़की भी है, आपका बेटा है, बेटी है, यू डोंट फील सिक्योर इन दैट कंट्री. टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. आप किसी भी सदर चले जाओ कराची के अंदर, वहाँ लोग आपने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो इस नज़र से आपको देख रहे होते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो. इसमें हमारा अपना भी कसूर है, ठीक है. तो ये नहीं है कि सब सियासतदान ने खराब किया, सब सियासतदान. हमारा अपना इखलाक कैसा, हमारा अपना कल्चर, ये तो हम खुद बेसिकली खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है. वो क्यों नहीं कर सकते कि मेरी बेटी मेरा बेटा सिक्योर फील हो उस मुल्क के अंदर कि अगर वो किसी यहाँ पर मैं रात को 10 बजे मेरी बेटी अगर टीनेजर है, आई विल फील सिक्योर, ठीक है, कि वो रोड पे जाए, अगर कॉर्नर शॉप जाना है, उसको सामान लेकर आना है और समथिंग, I will be not worried about too much कि ठीक है वो गई है, दोस्तों के साथ है. बट इन पाकिस्तान अगर वो सदर जा रही है, मुझे पता है कि 10 लोग वहाँ बैठ के उसको गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं. आप सीवीओ चले जाओ, बहुत ख़राब है. सेकेंडली लोग वहाँ पर जो मैंने भी लास्ट टाइम चीज़ नोटिस करी, गुस्से में रहने लग गए काफी सारे. फ्रस्ट्रेशन है, गाड़ी चला रहे हैं गुस्से में है, हॉर्न दिए जा रहे. मैं समझ सकता, बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन है. बिल्कुल ये कि लाइक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बॉस से डांट पड़ रही है, 50,000 की भी सैलरी नहीं है, बॉस से डांट भी पड़ रही है, और फिर भी आप काम कर रहे हो कि वो 50,000 देके ऐसा समझ रहे हो कि उसने खरीद लिया है आपको, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो. तो वो जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे को देखते हो तो आपका सारा गुस्सा उस पर निकल जाता है कि भाई तुम गाड़ी गलत चला रहे थे, या तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो. अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं क्या हूँ. वो एक सिस्टम का कल्चर बन चुका है. मेरा ओपिनियन फॉर द टाइमिंग यही है, आई विल लाइक हाँ, मैं चाहूँगा कि ये मुल्क ठीक हो, बेहतर हो, ताकि मेरे भी बच्चे जाके इस मुल्क में रह सकें और ये मुल्क और प्रोस्पेक्ट और आगे बढ़े. लेकिन फॉर द टाइम मेरे ख्याल से मैं विजिट के हद तक ठीक है कि बच्चे जाएं, विजिट करें, दिखाऊं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब का गांव कौन था, मेरे दादा कहाँ से थे, बट कम बैक अगेन, यू नो. अमोरा जी, आपका क्या 2 cents प्लीज? You want to go first? नहीं, मैंने शुरुआत तो मैंने की थी. तो मेरा भी वही पर्सपेक्टिव है जो ये कह रहे हैं कि आई विल ऑलवेज वांट टू गो बैक, बट शो करके अगर सिचुएशन अच्छी होती है तो ये कि भाई डॉलर्स में कमाओ, खर्च उधर करो, दैट्स ओनली लाइफ उधर. ये ही जो नजर आया मुझे. आपका क्या लगता है? When was the last time आप गई हो? Oh God, 2018. Not that bad. Yeah. मैं भी 2018 में गया. So I went in 2018, but again 2018 and now, obviously, I think ज़मीन आसमान का फर्क है. Yeah, exactly. But the thing is, मैं अगर मेरा perspective देखो तो I think very differently in that way. मुझे अपने बच्चों को, because myself, I think, and my parents as well, मुझे ऐसा लगता है कि I love Pakistan and I want to instill that in my children. Now, having not one child but 4 children, mashallah. तो not every one of them आप उनको same पाकिस्तान के लिए मोहब्बत दिल में डाल सकते हो, right? Definitely. They will go, oh my God, no way, Pakistan, are you crazy? No way. But then there would be another one of my child who would say, well, you never know, I will consider it. But please, मेरा ये चीज़ है कि this is our identity. Exactly. Yes. हमारे बच्चों की जो recognition है, चाहे वो कहीं भी दुनिया में पैदा हो जाए, हैं तो वो पाकिस्तानी by roots. तो they need to have something to fall back onto. And that falling back on, कि अगर उनको कभी भी ऐसा लगे कि they can take their skills, they can take their education, और जो भी उनकी जो as I said skills वो लेके जा सकते हैं
for the betterment of their roots for their country, why not? Yeah. Why not? Yeah. I never oppose it. I think it's fantastic. Again, safety is a huge aspect. Safety and obviously अगर हमारे बच्चे यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह अगर कभी गए तो obviously they will be earning good money as well over there. उनके पास opportunity ऐसी होगी कि they will be getting all the other necessary things जो उनको ज़रूरत है as a life. वो they will not be living in poverty or anything, God forbid. Yeah. तो वो एक डिफरेंट चीज है कि they will not be again exposed to that. वो वहां जाके भी they will be living the lifestyle that they have here. Yeah. Probably better because यहाँ पर उनको ये सब नौकर चाकर इनकी आदतें नहीं है. वहां जाके they are Exactly. they'll see that and it'll be different. Yeah. But मुझे ऐसा लगता है कि अगर and Imran Khan is a great example of that. Yeah. That he had the opportunity of not living there. He had the opportunity of living elsewhere, or uske, whoever, his family, his bache was there as well, living with him. But because of security reason, usko bhejna pada, right? So Pakistan बहुत खूबसूरत है. पाकिस्तान में beautiful चीजें हैं, लोग बहुत खूबसूरत हैं. लेकिन unfortunately उन लोगों को इतना मतलब थका दिया गया है they're just in the done. process that, of their life Yeah. कि वो बेचारे they've given up. तो मैं ये कहती हूँ to anybody who wants to जितना खाना है खाओ यार, लेकिन what is your end of the खाना? कितना मतलब पेट भर जाता है ना इंसान का, कितना खाएगा? मुंह तक, नाक तक, कहाँ तक खाएगा? सारे पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती. नियत नहीं भरती सही है. यार नियत भी ना भरे चलो ठीक है, लेकिन किस हद तक? What is enough for you? लिमिट क्या है? लिमिट What is enough for you? कि भाई ये है, मैंने इतना ले लेना है, इसके आगे मुझे कोई नहीं. आप ये करो, इंशाल्लाह आप देखना सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, including our generation, our children and their children, they'll be coming to Pakistan. Yes. Yeah, you're right. So look, I think इसी नोट पे let's end this episode. आप लोग अपने कमेंट्स बताइए, आप लोग अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं और आप कहीं और हैं, anywhere around the world, आप क्यों गए और आप वापस आना चाहते हो कि नहीं? That's it. We would love to hear from the community as the community grows. More feedback as well. Okay, what we can do better as a group, good discussions, or if you would like to hear कि हम इस specific topic पे बात करें, and any comments, anything, constructive criticism always appreciated. is always welcome. And look, thank you again for joining us on our third episode of Baithak. It was lovely having you here, and hopefully you keep watching us, keep supporting the channel, keep supporting our community and Pakistani and the greater Southeast Asian community as a whole as well. Thank you again. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.